Congress protest there in Lucknow. As we were telling you in the headlines that we are tracking the Congress threatening protests nationwide. Vivek joining us with the latest details on that. Vivek, it's over to you. Take us through what's happening right now. As we speak, Congress workers, we are seeing them protesting, sit-in demonstrations, the police taking action. ईडी दफ्तर के बाहर लखनऊ के ईडी जहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन हुआ है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के अपना विरोध दर्ज करना चाहते सोनिया गांधी से कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर आकर के अपना विरोध दर्ज करना चाहते सोनिया गांधी से जिस तरीके से जो पूछताछ हो रही है उस प्रकरण में अपना पूछताछ दर्ज करना चाह रहे थे, लेकिन उस दौरान ही पुलिस ने उनको यहाँ पर रोक रखा है और पुलिस यहाँ से उनको अपनी गाड़ी में भर करके उनको आगे ले जाने। किस बात को लेकर इस देश में जिस तरह सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके बल पर इस देश के लोकतंत्र को चोट पहुंचाई जा रही है, इसका खुला नजारा आज आपके सामने ईडी दफ्तर के सामने दिख रहा है। हम पूछताछ करना नहीं, पूछताछ करिए, मगर उसका एक तरीका होता है भाई। बहुत सारे ऐसे तो देखा जाए पूरे देश में बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, मगर सिर्फ अपने सरकारी संस्थाओं के दल पर राजनीतिक विपक्ष के राजनीतिक दलों की छवि को खराब करने के लिए, धूमिल करने के लिए जो इस तानाशाही सरकार का रवैया है, ये जग जाहिर हो चुका है। और आप देखिए बहुत जल्दी इस देश का आम जनमानस कांग्रेस जन के साथ खड़ा होकर इस सरकार को काट फेंकने का। पूछताछ होना क्यों मना है? क्या पूछताछ करना? पूछताछ के लिए सिर्फ विपक्ष बचा है। आज इनके मंत्री खुद निषाद, इनके जो सरकार के जो मंत्री थे, आज इन पे आरोप लगा रहे हैं, तो जवाब तो इस समय सत्ता सरकार उत्तर देगी। सरकार को भी केसों में जा चुकी। जो आज का मामला है उस पर जो पुराना मामला चल रहा था जिसमें ईडी पूछताछ करना चाहती है, अगर वो पूछताछ कर रही, अगर आप दोषी नहीं होंगे तो आप छोड़े जाएंगे क्या? तो हमने भी तो इस देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए संवैधानिक तरीके से आज ईडी ऑफिस के सामने धरना देना, विरोध करना इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और विपक्ष में अपना फर्ज अदा कर रहा है। मगर ये तानाशाही सरकार जो भी इसके सरकार के विरोध में खड़ा होने का काम करता है, उसको तोड़ने का, उसको डराने का काम करती है। सरकारी संस्था को गैर संवैधानिक तरीके से जो उपयोग किया जा रहा है, ये सरकार के लिए बहुत बड़ा धब्बा है, लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा धब्बा है। बिल्कुल। तो देखिए तमाम कांग्रेस के लोग हैं वो यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र में उनको इस बात की आज़ादी दी है कि वो अपनी बात रख सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। उनका ये भी कहना है कि देश में बहुत ढेर सारे और भी केसेस हैं जिसमें चीजें हो सकती हैं, आरोप बहुत से लोगों पर हैं, लेकिन ये इस तरीके से किसी एक को परेशान करना बार बार ये उचित नहीं है। हमने हालांकि इनसे ये भी सवाल किया कि क्या जो पुराने केसेस हैं क्या उसमें सवाल जवाब नहीं होना चाहिए, तो इस बात को लेकर के वो सरकार के आज की जो तमाम चीजें हैं उसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं। पर जो तस्वीरें आपको ईडी दफ्तर के बाहर से मैं दिखा रहा हूँ, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और वो ईडी दफ्तर पे आकर के अपना विरोध दर्ज कराना चाह रहे थे, लेकिन उसी दौरान पुलिस टीम ने उनको रोक लिया है। पुलिस की ये जो वैन है वो यहाँ पर खड़ी है, पुलिस अपनी वैन में उनको सभी को हिरासत में लेकर के यहाँ से इको गार्डन लेकर के जा रही है। ये तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो तस्वीरें में आपको दिख रहे हैं। So as the ED grills Sonia Gandhi, the Congress on the streets. Earlier, the Congress had, through various means, projected that they would be holding nationwide protests. And as you can see, the protests turning chaotic, not just in New Delhi, but across the country, in Lucknow, in Patna, as well as Mumbai. Joining us is our correspondent Amandeep from Chandigarh. Amandeep, how are the protests faring there? Nationwide protests the Congress had promised, even as the ED grills Sonia Gandhi. Well, absolutely, Rukman. This was the call given by the AICC to all the Congress offices to stage the protest against the ED, summoning Sonia Gandhi. And in fact, this would be the day-long process till the time ED will question Sonia Gandhi, and these Congress workers and leaders remain at protest. And you can see the visuals. This is the Punjab Congress office here in Chandigarh, and in fact, Congress workers and the leaders are arriving here, and in fact, they will start their protest from inside the office, and later on, they will start
start their march on the roads as well. And in fact, there are certain leaders who are also here, and we will try to talk to them also. Former Minister Sukhbinder Singh Sarkaria साहब, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? तो Kiki Dhillon is here. Dhillon साहब, protest is happening throughout the nation against the ED. See, I think across the nation, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ BJP ਉਹ ED ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਰਸਨਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ BJP ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਸਪਰੈਸ ਦ ਓਪੋਨੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ED ਰਾਹੀਂ CBI ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। The fact is that ED is a law enforcement agency, and they have full right to summon anybody and to question anybody. Then why this entire protest against ED? ED is not questioning only Sonia Gandhi. ED questioned Rahul Gandhi. ED questioned several leaders also. देखो गल ये है, we don't have an objection of anyone being questioned, but the way it is being done, it is a political motive behind it, and secondly the timing. So the timing is all over India, everyone knows, because BJP has failed on all fronts and it is not been able to deliver for the common man of India. So now they are trying to use these tactics to suppress, to divert the attention of the people from the real issues to these issues. So it's all political. That is why the protests are there. So you can see, Rukma, you can see the Congress leaders are saying it that this is a political agenda. से दुरुपयोग हो रहा है सरकारी संस्थाओं का, जो बंद होना चाहिए, तंग किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को। सोनिया जी सर, आप लोग कांग्रेस ऑफिस जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से जिस तरह सोनिया गांधी को राजनीतिक विद्वेष के साथ वो बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, प्रधानमंत्री पद ठुकराया है, वैसी महिला के साथ जो किया जा रहा है। देखिए, हमारे साथ लगातार ये सांसद हैं कांग्रेस के, दिवंगत मुद्दा को आपने सुना, राजीव रंजन को आपने देखिए। सर, आप लोग कांग्रेस ऑफिस तक जा रहे हैं, सोनिया गांधी को आज ED के सामने पेश होना है, क्या कुछ? मोदी सरकार हिंदुस्तान में पूरी तरह से लोकतंत्र को तहस नहस करने के लिए निकली हुई है। जिस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं, हमारे मुल्क के सामने बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ है। विपक्ष के दलों के नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसकी मिसाल आज सोनिया गांधी जी को ED के सामने बुलाकर मोदी सरकार ने देश के समक्ष रखी है। हम इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ED can call us also. Why not the ED call all of us? What up? ED के सामने सोनिया गांधी पेश हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? I've already said, it's a gross misuse, completely unnecessary. There is nothing to ask her. There is no reason for her to be called. She is there as the head of the Congress. She has lent her name to a directorship of a non-profit company. It's absolutely a gross abuse. So nationwide protests. Nationwide protests by Congress workers and top leaders in New Delhi. There you can see Shashi Tharoor as well as other top leaders a short while back, Abhishek Manu Singhvi and others, Ghulam Nabi Azad among others. And while some showed aggression, others were sarcastic in their remarks, but mostly they avoided the questions that Republic asked them. Meanwhile, protests turned to chaos in many parts of the country as the Congress rants about
misuse of state agencies to harass Sonia Gandhi, who is being grilled even as we speak in the National Herald case. Those are visuals there from New Delhi, from Mumbai, from Lucknow, Patna. We also have visuals from Chandigarh, where we have our reporters on the ground across the country telling us and giving us those updates as the Congress creates chaos with nationwide protests.